my physical class that happened on the last Sunday. Yes, right. And some of you, a bunch of you, have been attending the online classes. How many of you did not attend my previous class that happened on last Sunday? Now that's a disappointing number, I would say. It's very disappointing that you are not taking out time to, actually attend the classes. But anyway, now obviously we can't repeat everything that we've done. So we'll continue from wherever we have left. I'll just try to cover 2 to 3 topics today. Uh, क्या करना है बताइए बताइए मुझे बताइए इसका कोई कंट्रोल होता है वैसे नॉर्मली कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली इशू नहीं होना चाहिए या आ गया था आया था वो चला आ गया चला गया वो आ रहा है जा रहा है आप देख लीजिए इसको बहन इसको कर सकती नॉर्मली वर्क तो हमेशा ही करता है मैं अपने कॉलेज में भी यूज करता हूँ वहाँ उससे इशू नहीं होगा वो बिल्कुल सही है ये कंटिन्यूसली रोज ही इशू यूज होता है ये इसमें हो सकता है बट आई गेस आज यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा था नहीं हो रहा आप ये HDMI वायर या तो चेंज करवा दीजिए मैं इट शुड वर्क चलिए ये भी कर देते हैं आपके HDMI वायर में प्रॉब्लम है आप एक बार देख लीजिए इसको कोई बात नहीं आप देख लीजिए Can I have your attention, please? Okay, so we have 4 units in totality. We have finished the first unit, right, wherein we have covered all the topics. In case you have any problem in the first unit, I guess you'll be getting some remedial classes or some classes for clearing your doubts. There you can, discuss with me those topics if you have any problem related to it. Next unit we have listening skills. We have finished the netiquettes part. I hope some of you were there in my online class wherein I discussed that, and in fact in my class with BMS, I guess I discussed it again. So netiquettes is also done. Today we are just going to discuss a little about audiobook listening and discussions, and thereafter we'll be doing note taking, right? And then I'll see if I could touch upon persuasion skills and some other topics like summarizing and paraphrasing. So without any further ado, whether or not this sets up, let's start with today's topic. So if it would have been presented, it would have been great because I have certain pointers for you. But anyway, जब ये present होता है तो देखेंगे. Now when we talk about listening skills, unit 2 is listening skills. We have already done etiquettes, wherein we discussed that how the way most of the things have shifted into the digital mode after the pandemic, right? So we are in a habit of being into meetings, and it gets very important for us to connect with people when it comes to connect with people in the digital mode when we talk about a professional setup. कोई भी किसी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे लगता है एक मेजर चंक जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करने लगा है, like specifically after pandemic, right? So in those 2 years when we were sitting at home, all the meetings, all the functioning of the organization used to happen on the digital platform only. कुछ लोगों ने applications use किए खुद के, कुछ लोगों ने online meetings करके किया, कुछ लोग अपने website के through handle कर रहे थे. Then people were managing things with their clients on telephonic calls. So all of these things were happening. इन सब चीजों में एक चीज common थी, that is listening. Yeah, listening is very important. Now listening is also important with this aspect that if you have to become a good
speaker, you need to be a good listener first, right? So what are the things that आर अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, एंड वो लिसनिंग स्किल्स क्या है जो हमें एक अच्छा लिसनर बना सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर. नाउ यू नीड टू प्रिपेयर. प्रिपेयर क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पीपल हैव कम हियर टू लिसन टू मी, so you should have been prepared with some content that I was about to teach you, because मैंने बताया था मैं कौन से टॉपिक्स आज पढ़ाने वाला हूं. Now this is called preparation. You are you are studying communication in professional space. So definitely if a meeting is set up, it is declared वो मीटिंग किस बारे में होने वाली है. Agenda is declared before a meeting. Now agenda is made clear to each and every person who is going to be part of that meeting. जब आपको एजेंडा बता दिया जाता है तो प्रिपरेशन में आता है that you should be prepared with at least some pointers whether or not you are expected to speak something. Because if you are prepared, you will be able to comprehend things in a better way. अभी आप लोग जब 12th में थे या 11th में थे, अलग अलग डोमेन से थे, क्या कितना अच्छा होता था जब ट्यूशंस में वही टॉपिक पढ़ाए जाते थे जो स्कूल में आपने एक बार पढ़ लिया है, कैसे जल्दी से समझ में आ जाता था. सिमिलर टू दैट, जब स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाने वाली है टीचर नेक्स्ट डे, एंड यू यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट टॉपिक, एक बार उसको देख के आ जाते थे, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा होता था, राइट? सो प्रिपरेशन इज मस्ट. प्रिपरेशन में और क्या आता है? प्रिपरेशन में आपका ड्रेसिंग सेंस भी आता है, राइट? रात को उठे, नाइट सूट में पहुंच गए, नो. ड्रेसिंग, अब यू डोंट हैव टू ड्रेस अप इन अ वेरी एलीट मैनर. ऐसे कुछ चमकना दमकना नहीं है, ना रणवीर बनना है ना शाहरुख बनना है, राइट? ना सूट बूट में अंबानी की तरह चले जाना है, बट एटलीस्ट डिसेंट टाइप ऑफ एन अटायर इज एक्सपेक्टेड, समथिंग which is respectable and as per the occasion, right? Next we is pay attention. Now paying attention is very important and one of the major skills under listening skills. भाई जिसको बोलना है ना बाहर कट लो, ठीक है? सुनो, बोलना है तो फ्रूटफुल बोलो, and I'm open to listening to you people. But then if you are not adding anything fruitful to this class, please feel free to move out. Okay, second is pay attention. Now you need to pay attention. Prepare होके तो बैठ गए, पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं मुझे तो सब पता है, मैं तो पढ़ के आया हूं, समझ के आया हूं. No, that does not suffice for the purpose of that meeting. So what you need to do is that pay attention. Pay attention में important क्या है? That you need to become an active listener. There are different types of listeners. Some are active listeners. Active listeners कौन होते हैं? जो चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके पास सवाल आएंगे या नहीं भी आएंगे तो दे विल गिव अ फीडबैक. जरूरी नहीं है वो फीडबैक बार बार बोलेंगे यस सर वी हैव अंडरस्टूड, यस सर आई हैव अंडरस्टूड. नो, you can give your feedback by nodding your head, by blinking your eye, or by making a gesture. But again, this is an informal gesture, you can't do it in front of a meeting, right? But then in some meetings people tap their table to make an assertion ki theek hai, they agree with it or they are in support of it. So in a way you give a feedback. So paying attention includes giving feedback as well. तो एक वे एक्टिव लिसनर्स. नाउ सम आर पैसिव लिसनर्स, वो जो प्रिटेंड करते हैं कि वो सुन रहे हैं बट एक्चुअली में सुन नहीं रहे होते. सो दोज एम्प्लॉयज आर बेसिकली देयर टू प्लीज द बॉस or to just pretend that they are listening. Now that is not the right type of listening, and that shows that you are not paying attention. Then there is something called listening with some filter. कुछ फिल्टर के साथ कि आपको कुछ ही चीजें सुननी है. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वांट टू लिसन अबाउट योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कोई अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको गलत बात लेट से नहीं सुननी, राइट? सो जब आपके बॉस बोल रहे हैं कुछ, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ वो चीजें सुन रहे जो पॉजिटिव है. So that is filtered listening. So इस तरह से काफी अलग अलग तरह की listening होती है. But when we talk about paying attention and when we talk about listening skills, so you need to have active listening skills. Do not interrupt. If somebody is speaking, refrain from interrupting. गलत manner माना जाता है. It is considered to be rude. If anyone is speaking, no matter that person is below your level, if you are a manager and your supervisor is speaking up a point, right, in between that meeting, and if you think that that is wrong, still let the person complete, raise your hand and then say, I would like to add something over here. Do I have the permission to speak something? Now that is the right way of intervening rather than interrupting that, hey, you are speaking it wrong, let me speak. No, you should not do that. ठीक है, कोई बोल रहा है, let that person complete, raise your hand, say that you want to add something or you want to correct some fact, and then once you are permitted by the whole gathering or by the person who is moderating, then speak, right? Then we have empathize. So you need to be empathetic. Empathetic का मतलब है being in the other person's shoes and trying to understand. If a person does not know the right language, let's say आप लोग इंग्लिश में मीटिंग कर रहे हैं, किसी एक शख्स को हिंदी
इंग्लिश अच्छे से नहीं आती बोलनी, वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा है. सो एज अ गुड जेस्चर यू कैन से दैट, अगर बाकी लोगों को हिंदी भी समझ में आती है, so as a good gesture you can just say to that person that please feel comfortable in speaking in Hindi as well, हम लोग समझ लेंगे, right? So that will also add on value to the meeting, क्योंकि ultimately meeting का purpose क्या है? एक दूसरे के साथ communicate करना. If the purpose won't be fulfilled, so what is the whole justification of the meeting, right? So the basic is to understand each other, right? So you need to be empathetic. कोई बीमार है and that person cannot speak, so somebody can speak on his or her behalf. Somebody can priorly take some pointers of that person and say that, let's say Mr. ABC is sick today, so I'm going to speak on his behalf. Just in case I get wrong somewhere, I request Mr. ABC to correct me. So that's the right way. So you need to be empathetic. Ask question. Asking question is very important, right? Don't sit there like a dumb person in between a meeting, right? So asking question is important. Asking question का मतलब ये भी नहीं जबरदस्ती questions पूछ रहे हैं. कुछ लोग पूछने के लिए पूछते हैं कि चलो पूछते हैं, इंप्रेशन अच्छा आएगा बॉस पे. No, you do not have to do that, right? Asking questions, means that you were intently listening to what was being deliberated, right? So asking question is very important. Next is refrain from premature evaluation. At times we are prejudiced with somebody. हमें किसी से प्रॉब्लम होती है किसी इंसान से, and if that person is speaking in between a meeting, so what do? We prematurely evaluate about that person's point or contribution to the communication that is going on, and then we make our judgment, and then हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझ रहे होते हैं. बट कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, बिकॉज वी प्रीमेच्योरली इवेल्युएट दैट पर्सन, एंड उस हमारे माइंड में जो जजमेंट है उसके हिसाब से हम सामने वाले इंसान को जज कर रहे हैं. सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम प्रीमेच्योर इवेल्युएशन. लास्ट is what I told you in the very beginning, that is feedback. Feedback is must, because feedback will ensure that the person who is speaking, the points are being delivered to you people. If you are in a meeting, or you are normally communicating within an office, so feedback is very important. Don't be there like a very dumb sort of a person that the other person keeps on speaking and you are like, don't be that, right? So that will make the whole thing monologic. Make things dialogic, make things be interactive. Interactive का मतलब क्या है? ब्रेक करो. इंटर मतलब आपस में, एक्टिव मतलब सब एक्टिव है उस कम्युनिकेशन में. सो मेक थिंग्स इंटरैक्टिव, और इंटरैक्टिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंडर जरूरी नहीं होता, लिसनर्स या रिसीवर्स भी जरूरी होते हैं. आर यू पीपल गेटिंग मी? नाउ दिस इज व्हाट आई was pointing out. Feedback is important, right? So we have, हाँ जी देख लो, आप देख लो, मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, ठीक है? Now when we talk about listening skills, there are two words, hear and listen. दोनों अलग है. Hearing is that, if people are shouting outside and someone from here starts making a point over here, so I will listen to that person, but I'll hear all those noises. That means hearing is just a biological activity that कुछ स्टिमुलस आपके ईयर्स के जो पार्ट्स हैं वो रिसीव करते हैं, कुछ वाइब्रेशंस रिसीव करते हैं, एंड देन यू जस्ट योर ब्रेन टेल्स यू दैट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अ साउंड अराउंड यू. बट देन लिसनिंग इज व्हाट, that you are actually trying to understand and interpret what your ears are receiving. You can hear a lot of noises, but you only listen to what you want. Yes or no? Listen की जब बात करते हैं वो आपकी चाहत से होता है, आप क्या सुनना चाहते हैं. Hearing, it's uncontrollable. आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर चारों तरफ आवाजें आ रही हैं तो सुनोगे ही. Now when I talked about preparation, preparation का भी एक मेजर पार्ट होता है hearing and listening. क्यों? Because if you know that you have to hold a panel discussion in a business conclave. एक business conclave हो रहा है, आप एक panel discussion में बैठे हैं, you are one of the panelists who is representing like you are one of the panelists and you are representing your organization. Now if you know that there are a lot of people in the audience, then definitely there would be noise. People might just start talking. You can't keep make them point, hey last table चुप. You can't do that. आप एक पैनल में बैठे हो, पैनल डिस्कशन चल रहा है, आप एक पैनलिस्ट हो, आपको शोभा नहीं देगा कि आप पॉइंट आउट करके बोलोगे, बट आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा that there may be some noises. So you need to be able to
distinguish between what you have to hear and what you have to listen. Somebody might be making up a point from the audience, so you need to also be aware कि कुछ चीजें आपको वहां पे लिसन करनी है, कुछ हियर करनी है, पर क्या हियर करनी है, क्या लिसन करनी है, that solely depends on you, right? So there are certain pointers which I would have showed you, but anyway I'll show you later. So first we have done netiquettes, right? We have done it in the online class as well as in the last physical class. So the next chapter under listening skills is audiobook. Now see, this is skill, this paper is a part of skill enhancement course. Now the whole purpose of uh, building up such a course was to inculcate certain skills in you through practicality. But because this is these are certain counseling classes that you are getting, so it is difficult for me to do activities with you. Otherwise regular classes में audio book listening की activities करता हूं मैं, जिसके थ्रू हम listening skills को होन करने की कोशिश करते हैं. बट यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी हैव अ क्रंच ऑफ टाइम, right? But still I would like to just tell you why we have inculcated audiobook listening. See, uh, we cannot always look at something consistently. वो फिजिकली भी हमारे लिए खतरे वाली बात है. आंखों को दिक्कत होती है, स्क्रीन पे कितनी देर पढ़ोगे, राइट? सो like these days we have audiobooks, we have certain applications like Audible, right, which have audiobooks, and you can easily plug in the earphones, even close your eyes and listen to the audiobooks. Now why is it important and why is it being included in your syllabus? So if you look at the syllabus, it is audiobook listening and discussions. So ideally what happens in the regular class is that I give students a 15-minute or a 20-minute short audiobook to listen, and then we have a discussion on it. कभी वो कोई किसी लीडर की स्पीच हो जाती है, कभी वो किसी कोई स्टोरी हो जाता है, then we have a discussion. It is done to just to just hone the listening skills of the students, because how it happens is that I give you the audiobook to listen, and after that I ask you a particular question, or I pick up a particular theme of the whole audiobook, and then people have discussion among them, right? So it tells each one of the students how much they could listen and how well they could understand the things that they listened. With practice they get in a habit of listening things particularly and understanding and interpreting things in a good manner. It does not just do that, it also hones your vocabulary. Vocabulary increase होती है आप जितना ज़्यादा audiobook सुनते हैं. It also adds on to your pronunciation, the way you pronounce things, that gets sharpened, right? You learn the right pronunciation. So it is just a suggestion from my end. What I'll do, like some of you must be added in that particular WhatsApp group that you people have only created. I'm going to send you some certain audiobooks, right? I want you all to listen to it. Then in the next class, if we get to meet, we'll have a 5 to 8 minutes discussion on those audiobooks that I send you, right? That will be able to understand. हाँ जी बोलिए सर, दूसरा कोई कनेक्टर है भाई, ये बिल्कुल सही है सर. तो ये अभी तो हमने भाई, दूसरे लैपटॉप से सही चल रहा था. ऐसा मत बोलो, तकलीफ हो जाएगी. 6-8 हजार रुपए का ये चल रहा है भाई, 6-8 महीने से. सर ब्लिंकिंग आ रही है सर, इसमें नहीं चल. ये कल तक चल रहा था सर मुझे पता नहीं, नई केबल है और हाँ. लैपटॉप भी सही है, वो प्रोजेक्टर भी सही है. एक काम करिए, मुझे रहने दीजिए, आई जस्ट कंटिन्यू. वैसे भी मेरे पास 15-20 मिनट है, आई कंटिन्यू. मैं ये भेज दूंगा बच्चों को, कोई बात नहीं. ठीक है, धन्यवाद. आप रहने दिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको. ब्लिंकिंग करेगा दिक्कत. ऑफ कर दें इसे, ठीक है, चलिए. I'll send you the content or I'll show it to you in the next class. ठीक है, don't worry about that. So all in all, I'll just point down certain I'll just highlight certain pointers that I would have shown you. So communication becomes fun when you talk about audiobook listening, because at times it gets boring to read a story over the screen or in the like with the help of written communication. So it becomes fun. Second is audiobooks are easily accessible. लिसनिंग स्किल पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है. Yeah, this is better. So things are accessible, so you just at a click of click on your phone, you can access whatever you want to listen. That's why audiobook is important. You are able to give rest to your eyes. We have discussed that. You learn pronunciation, your vocabulary gets honed, and it aids to manage time. So you can while going in the metro, you can listen to something, right? So even when we are in a professional space, we need motivation, let's say, right? So when we need motivation, rather than if we don't have time to read a book
in a metro, what we can do is that we can plug in the earphones and we can listen to some motivational book. We can listen to some we can listen to motivational talk, and that will not just motivate us, rather also increase the vocabulary and sharpen the pronunciation. So this was all about audiobook listening that I had to discuss it with you. Now note taking, आप इसे ऑफ कर दीजिए, और अगर मुझे चौक, अच्छा व्हाइट बोर्ड है ना, ठीक है, आप इसे ऑफ कर दीजिए. See, my writing is very horrendous. I scarcely write. So if you don't understand, just let me know. You people have done note making, right? In your syllabus, there is note taking. Now, how is note making and note taking different? And note taking listening skill में है, note making writing skill में आता है. Note making का मतलब है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं and then you make notes from it, right? You make your own notes. Let's say you read a research paper, or let's say you read a case study, right? आप किसी एक प्रोफेशनल सेटअप में हैं, आपके पास एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है किसी क्लाइंट का, राइट, दैट द क्लाइंट हैज अग्रीड टू टेक a particular number of products from you, and then you are and that client has also agreed to pay a certain amount for it, and then there are terms and conditions. Now you have to hold a meeting to talk to the manager over there about certain contracts like those. So you can't just read out each and every point. What you will have to do is make notes. That is note making. It's a part of written communication. Writing skills का part है. आपको जो पढ़ना है, that is you have to study note taking, right? Now what is note taking? If I'm speaking something and you people are actually sitting like you don't have to, वो बच्ची है लेकिन वो कुछ बना रही है, साहबजादे ने नोटबुक खोल रखी है बट उसमें कुछ नोट नहीं कर रहे हैं, और आप लोग सब ऐसे बुक्स और कॉपीज रख के बैठे हैं. यही सीखना है हमें. इंपॉर्टेंस ऑफ नोट टेकिंग. ह्यूमन माइंड है, कंप्यूटर नहीं है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई नहीं है कि है तो है, और कंप्यूटर को भी हमने ही बनाया है, ठीक है. द आइडिया इज whenever somebody speaks something to you, always try to take down notes. ऐसा जबरदस्ती नहीं है. इफ यू फील लाइक डूइंग इट, ओनली देन डू, एंड डू इट क्वाइटली. हाथ चलने चाहिए, मुंह नहीं चलने चाहिए, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नोट टेकिंग, इफ समबडी स्पीक्स समथिंग, देन यू टेक नोट्स. अब क्या आप हर वो चीज लिखोगे जो स्पीकर बोल रहा है? I've been speaking for last 10 to 15 minutes. You cannot write at the speed in which I am speaking. You cannot do that. But what you can do is that you can make your own notes. आप अलग अलग तरह से अपने notes बना सकते हैं. I would have again shown you, I have really had a good PPT. But then see, if you remember your note making thing, so you used to write like this. You used to write the topic, yes or no, or you used to just write note making, something like that. Yes or no? Right? Then topic, subtopic, subtopic. So the structure used to be something like this, right? Now when you talk about note taking, it is something which is very personal. Note making used to have a particular format, क्योंकि वो राइटिंग स्किल्स का पार्ट है. जब राइटिंग स्किल्स का कुछ पार्ट होता है, इट नीड्स टू हैव अ फॉर्मेट, बिकॉज समबडी हैज टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड. वो किसी और इंसान के लिए भी हो सकता है, वो आप मोस्टली आपके लिए होता है. नोट टेकिंग जो होता है वो ज्यादा पर्सनल होता है, एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग, आपके सामने पूरा रिटन मैटर पड़ा हुआ है. आप कभी भी पिछले वाले पॉइंट पे जा सकते हो और फिर से उसमें करेक्ट कर सकते हो अपने नोट मेकिंग में. पर क्या आप मुझे रिवाइंड कर सकते हो? मैंने बोल दिया, वो चला गया फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ डायमेंशन में, पैरेलल यूनिवर्स में, कहीं तो चला गया, बट आपके दिमाग में भी जाना चाहिए था, राइट? नाउ द आइडिया इज, दिमाग में गया, कितना गया वो डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से नोट बनाते हो, और कितनी टाइम तक उसको याद रखोगे वो भी डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे नोट्स बनाते हो, राइट? बट हियर देयर इज नो गोइंग बैक. Hence, there is no particular format. It depends on you how you make your notes, and it should be presentable. At times we take down notes. Teacher पढ़ा रहे, हमने अपने notes बनाए, हम ही को समझ नहीं आता, अरे ये कब बोला, नहीं आता. So उसमें भी आपको presentable notes बनाने, but because it is personal, you should be able to understand it. So you can do it in any way.
One way of doing it is in the format of note making. इस तरह से कर लो. If I started with a discussion on, let's say, मैंने किससे start किया था? I started with listening skills. Yes, so you could have just done like this. Listening skills. अगर तुम्हें पूरा भी नहीं लिखना listening skills, then I discussed about preparation. You could have just done like this. Preparation. So this is one way of doing it. Preparation. Then I told you about next point, active listening. I told you about that. मैंने फिर दूसरी तरह की listening के बारे में बताया. I told you about pseudo listening. So you could have made your notes like this as well, in the format of a tree. इस तरह से बनाना था. So you could have just made it like this: listening skills. As a subtopic, you could have just written, let's say, prepare, listen actively. Listen actively में मैंने बताया था feedback. So you could have done like this. So this is because this is something very personal, right? This is something very personal. So it could have happened in this format. जिस format में आप note making करते थे, tree format में हो सकता था. Then I talked about active listening, passive listening. आप पे depend करता है आपको कैसे understand करना है. You could have done it in the tabular form. You could have made a table, listening skills. You could have just done this: active, pseudo, filter. एंड इसमें जो जो पॉइंट्स बता रहा था बस कीवर्ड्स लिखते जाते. सो दिस इज वेरी पर्सनल. You can do it in any way, but for that again listening skill is important. How will you take down note if you will be distracted in your phone? How will you take down notes if you will talk to your friend while a meeting goes on? You cannot take down the right notes, and if you cannot take down the right notes, बाद में जाके अब जब अपनी डायरी या नोटबुक फ्लिप करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. And it is very important in professional space, because when a meeting happens, there are a lot of things that are discussed. There are times when you cannot remember some important or crucial points that your boss may have conveyed, right? Let's say the boss told you that there needs, like, from 1989 to 1995, the number of units that we sold were 1.3 billion. From this year to this year we sold these many billions, blah 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 blah. वो कहीं और अवेलेबल लिस्ट से नहीं है, उसके पास उसके रिपोर्ट में है. आपको क्या याद रहेगा उतना फिगर? नहीं रहेगा. इसलिए you need to take down notes. That is why note taking is important, right? So this was about note taking. So there are 3 topics under listening skills. So we have discussed what is listening skill, why are listening skills important, specifically when we talk about professional life, and under listening skills we discussed netiquettes, we have discussed audiobook, and we have discussed note taking. All 5 things are done. I'm moving to the next chunk of the discussion. So for summarizing and paraphrasing, I can definitely teach you that, but for that I'll have to show. How many of you are there in group? I can quickly click the images and send it there. आप लोग mostly group पे हैं, ठीक है ना? I'll just click certain slides and I'll share it over there so that you can understand, because there are certain examples. Just give me a minute. Okay. I'll just send you some example. Hold on. Group का नाम क्या है? Can somebody just tell me the group's name? Sorry? Okay. ऐसा कोई ग्रुप नहीं है. Sorry, I am not added. हाँ? CPL. मैं ऐसे किसी ग्रुप में नहीं हूँ. So somebody just, अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा. चलो कोई बात नहीं. We have 8 minutes. I'll do it without it. I'll send you the material in your teams or in the group later on. अभी के लिए फिलहाल just carry on with the discussion part. See. Shh. Ladle. So there are 2 topics in your this paper: summarizing and paraphrasing. Summary you have been doing since your 5th class. Section 1 का पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसके अंडर आपका क्वेश्चन होता था राइट अ समरी इन बिटवीन दीज वर्ड्स, राइट? एंड आप लिख देते थे. क्या करते थे? कुछ पोर्शन अपनी मति बुद्धि के हिसाब से वहां पे लिख दिया और समझते थे समरी हो गया. ठीक है, दैट्स वन वे टू अंडरस्टैंड दैट.
Now we need to understand what exactly is a good summary. One, how is summary relevant to a professional life and for you as well being a student, right? Why, what is paraphrasing and how is it important? Then what is कोटिंग समथिंग, जब किसी चीज को कोट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? नाउ कोटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट देन व्हेन वी स्टडी समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, कोटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट. लाडले, लास्ट टाइम देखूंगा, मतलब अगली बार देखूंगा तो सीधा बाहर, ठीक है? So I'll be very quick with it. We have 8 minutes. So when we talk about summary, it is basically shrinking the content that is there in front of you. Basic understanding है, सबको पता है. जो भी कंटेंट है उसको कंडेंस कर देते हैं, करते हैं, यस और नो? बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या? दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट आर देयर इन द ओरिजिनल कंटेंट. यस और नो? अब तुम बोलोगे कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक तो बस पेपर दे रहे थे, उसमें जरूर उसमें पूछ देते थे, हम लिख देते थे. प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कैसे है? सी गाइस, at times you have to read many contracts before making your own contract with a particular client. पुराने contracts पढ़ने पड़ते हैं, पुराने financial reports पढ़ने पड़ते हैं. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग financial reports होते हैं, उनके annual reports होते हैं, right? So when you read all of those things, let's say कोई 100 पेज का annual report है किसी कंपनी का, right? And you are working under a particular investor, right? आप मान लो अशनीर के अंदर काम कर रहे हो. How many of you know अशनीर? ओके, पता है मोस्टली को. आप अशनीर के अंडर काम कर रहे हो, आपको पता है अशनीर कितना चूजी है, राइट? नाउ ही हैज डेजिग्नेटेड यू द जॉब ऑफ रीडिंग अ पर्टिकुलर कंपनीज. भाई तुमसे तेज बोल सकता हूं, सारे चिल्लाओगे इससे भी तेज, इसलिए चुप रहो. मेरे पास 5 मिनट है, लेट मी यूटिलाइज दैट. आएगा वहीं से पढ़. सो आई एम सो सॉरी. सो Ashneer has given you the opportunity to go through the annual report of a particular company, and then on the basis of the analysis that you will do, Ashneer is going to have a thought over it, and then वो investment का सोचेगा कि उसके पास इतना टाइम नहीं है ना, सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, वो सारा कुछ वो पढ़ेगा, तो आपको उसने एम्प्लॉय कर दिया, आप में से किसी एक को. नाउ द थिंग इज, वो 100 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट है किसी कंपनी की. ना बाय द टाइम यू आर ऑन 74th पेज, क्या आपको 4th पेज का कंटेंट याद रहेगा? और चलो याद रहा भी तो आप वापस से जाओगे और एक एक चीज पढ़ोगे, वो एक पॉइंटर ढूंढने में. their summary plays a great role. You can either make notes or write a summary of the important pages. आपने देखा फर्स्ट जो आपका सेक्शन है, लेट्स से वो 10-12 पेजेस का है, so you wrote your analysis, you wrote the summary of those 10-12 initial pages, then you wrote your observations and then the analysis. फिर आगे के 15 पेज का, फिर आगे के 30 पेज का. So in that way summary helps you to understand a large data in a very condensed form, and you are able to, you can always go back to the summary and remember the point, the important details that were there in a very hefty and large text. कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उसके समरी को पढ़ के आप कभी भी उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को वापस से रिफ्रेश कर सकते हो अपने माइंड में. दैट इज व्हाई समरी इज इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. तो आपको ऐसे ही रीडिंग स्किल्स में नहीं था आपके बचपन से, कुछ उद्देश्य था उसका, ठीक है? नो समराइजिंग तो पता लग गया. सी समरी का बेसिक फंडा यही है, यू हैव टू कंडेंस द ओरिजिनल टेक्स्ट. जो कंडेंस करोगे दैट शुड बी डन थॉटफुली, एज इन यू कैन नॉट जस्ट पिक रैंडम पॉइंट्स और उसको आप लिख दोगे और बोल दोगे सर समरी लिख दी. नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है you should not miss out on important details. Do not miss out on necessary information in the original text. First important point. Second, because हम chunks निकाल रहे हैं ना, एक बड़ा 300 words का हमारे पास content है, हमें 1/3, हाँ summary should be 1/3 of the original content, right? उसका 1/3 as in 100 words, right? 300 words में से हम 100 words जब निकाल रहे हैं, so what happens? बस just give me 3 minutes. So when we condense a hefty original text in 1/3, so what happens that we need to also sync the details that we pick from there. एक पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट उठाया, तीसरा पॉइंट उठाया, बट दे शुड मेक सेंस. उनमें कुछ कोहेरेंस तो होना चाहिए. It should sound as if it is going in a flow. So your summary should also be in a logical fashion. Sentences should be written in flow.
I'll quickly jump on paraphrasing. Paraphrasing क्यों important? What is paraphrasing? Simply break करो. Paraphrasing. So you rephrase something in your own words. Summary में आप अपने शब्दों में नहीं लिखते हो, वहीं से पिक करते हो और उसको एक लॉजिकल फैशन में अरेंज करके एंड देन यू पुट इट अप देयर. बट देन paraphrasing is rephrasing the original text in your own words, right? And here there we are, the size becomes 1/3. Here the size can be same, the size at times even increases, it can be less as well, but there is no constraint on the number of words or size, because paraphrasing is putting things in your own words, rephrasing things in your own words. Why is paraphrasing important and why is it done? See, when we talk about research work, there is a word called plagiarism. प्लेजरिज्म कितने लोगों ने सुना है? जब आप किसी और के काम को अपना बताकर और पुट अप कर देते हो, एंड इट इज अ क्राइम एज वेल, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर एक ये क्रिमिनल ऑफेंस आता है, की तरह लिया जाता है, राइट? नाउ व्हेन यू रीड समथिंग, राइट, सो you cannot just take down the points from there directly, you need to rephrase it, and that is where paraphrasing plays a big role. Now to write a good paraphrasing, first thing which is important, that you need to have a good understanding of what is written. You should be able to understand the whole original text as singular paragraphs and in totality as well. अलग अलग पैराग्राफ्स का क्या मतलब है, कैसे वो सिंक हो रहे हैं एक दूसरे से, एंड टोटलिटी में उसका क्या मतलब निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो important, right? In research work it is important so as to save you from any criminal offense of copying somebody else's work, right? Your vocabulary needs to be good, because आपको words का मीनिंग वही रहना चाहिए, आपको दूसरे वर्ड्स यूज करने हैं, सिनोनिम्स बहुत सारे आने चाहिए, फ्रेजेस बहुत सारे आने चाहिए. और वो कैसे आएगा? रीडिंग से आएगा. यू कैन ओनली बी अ गुड राइटर इफ यू आर अ गुड रीडर. जितनी ज्यादा चीजें रीड करोगे उतनी अच्छी राइटिंग स्किल होगी तुम्हारी. वी विल डिस्कस अबाउट इट क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो मेरी तरफ से काम क्या रह गया, दैट आई विल बी सेंडिंग यू ऑडियो बुक्स, सर्टेन ऑडियो बुक्स, लिंक्स भेज दूंगा या यूट्यूब लिंक्स या कुछ भी मैं भेज दूंगा. डन. दूसरा मेरी तरफ से काम है, आई विल गिव यू सर्टेन कंटेंट रिलेटेड टू समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, wherein you will have certain examples. एक ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, उसका समरी और उसी का पैराफ्रेजिंग, so that you understand the difference. ठीक है, मेरी तरफ से ये काम आया. और तीसरा काम क्या रह गया, what have I taught you today? Note taking, right? So I'll give you certain examples of note taking as well in the written form. So ये तीनों deliverables मेरी साइड से आएंगे. आप लोगों की तरफ से नेक्स्ट क्लास में जो भी एक पर्टिकुलर अगर मैं ऑडियो बुक देता हूँ उस पर हम डिस्कशन करेंगे. यू शुड बी रेडी विद इट. यू शुड बी ऑल्सो रेडी विद योर डाउट्स. अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ आया है, सो डेफिनेटली कुछ आगे अपना पढ़ के कुछ तो डाउट्स आएंगे. डाउट नहीं आएगा तो एक फीडबैक देना, सर समझ में आ गया. सो दिस इज योर डिलीवरेबल. डन. हैव अ ग्रेट डे. बाय.